get central part as a, or that central point as a central bright. But if someone introduce some glass or other medium mica in front of slit, then central bright will be shifted from central point. Okay, so before going to discuss that part, so let us discuss the important point, that is what is optical path. What is optical path? Okay, so suppose you have a electromagnetic wave. So suppose this is your medium and this is your medium. Okay, and the thickness of this medium is basically capital small d, and the refractive index of this medium is mu. Okay, so when the light is passing through this medium, okay, when the light is passing through this medium, so optical path during traveling this medium will be how much? So that ray is passing from this point to this point. Okay, so although that geometrical path will be actually the thickness of this medium, but optical path will be how much? Optical path, when that electromagnetic wave traveling through this medium, that optical path will be nothing but, optical path will be how much? That will be a refractive index of this medium into the distance that is traveled by this electromagnetic wave. So I have taken that thickness of this medium is d. Okay, so distance traveled by this electromagnetic wave is how much? D, and mu is the refractive index of this medium. So when that electromagnetic light is passing through this medium, the optical path will be how much? Mu into d. Okay, so we can say that optical path of any medium is nothing but a refractive index of this medium into geometrical path. Okay, this is a very important part, because now we are going to discuss about that introduction of glass plate in front of slit. So yesterday we have discussed when the two rays will have that phase difference is of the order of 0 to pi, 4 pi, then you will get constructive interference. In other words, अगर दो रे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, n लैम्डा की ऑर्डर में है, तब आपको क्या मिलेगा? कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. अगर दो रे के बीच में अगर आपका पार्ट डिफरेंस 2n माइनस ऑन लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में है, इट मींस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, देन यू विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बट जब आपका कोई ऑप्टिकल मीडियम है, तो आपको पार्ट डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा. यस्टरडे दैट केस वाज सो सिंपल. क्यों? क्योंकि वहां पे आपका लाइट किस में पास हो रहा था? एयर में पास हो रहा था. ठीक है ना? बट सपोज मान लो इस तरह की केस है. So again you have two slits. Okay, S1 and S2. Okay, their separation is small d. Okay, and you have a screen. आप लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you have a screen, and the separation between slit and screen, that is capital. Okay, ठीक है, and you have a central point. You have a central point that is at P. ठीक है ना? तो आपको yesterday ये central point Q आपको ब्राइट मिल रहा था, क्योंकि जो रे S1 से पास हो रहा था, S1 to P, द पार्ट जो S1 से रे पास हो रहा था, S1 P, दैट पाथ इज एग्जैक्टली सेम एज S to P. सो दो रे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना मिल रहा था आपको? 0 मिल रहा था, राइट? सो इफ यू see that S1P, the ray is passing from S1 to P, that is S1P, and the ray is passing from S2 to P. So S1P and S2P, both length are same, right? So it means the ray path difference between two rays coming from S1 and S2 is 0 at point P, or central point. That's why you are getting central bright. Now suppose the case I have introduced a glass plate in front of S1 slit.
and let us assume the thickness of this glass plate is t and its refractive index is mu. ठीक है, तो अब आपको इस पॉइंट में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए आपको ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा। आपको सिंपल जियोमेट्रिकल पाथ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका क्या है, आपका मीडियम क्या आ गया था, आप यू हैव मीडियम दैट इज light is no longer passing through only air but also it is traveling through glass plate। ठीक है, तो यहाँ पे जो S1 से P में जो रे पास हो रहा है इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, एनीवन, कितना हो जाएगा? नहीं, ऑप्टिकल पाथ मतलब टोटल पाथ लेना पड़ेगा। तो देखो ऑप्टिकल पाथ का मैं कौन सा डेफिनेशन क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल पाथ और जियोमेट्रिकल पाथ। देखो यहां से जब रे पी में पास हो रहा है तो दो मीडियम में पास हो रहा है, एक तो आपका एयर में पास हो रहा है और दूसरा ग्लास में पास हो रहा है। ठीक है ना, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ आप जब काउंट करोगे S1 से P में, दैट इज S1 P, टोटल ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा? एक तो आपका एयर में कितना पास हो रहा है, एयर में आपका पास हो रहा है S1 P माइनस T, दैट मच अमाउंट और दैट मच लेंथ इज पासिंग थ्रू एयर। तो इसके लिए ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, S1 P माइनस T इंटू ऑन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, बेसिकली ऑन होता है, राइट। फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट क्या है, इतना लेंथ किस मीडियम में पास किया है, अरे दैट इज क्रॉस थ्रू एयर। तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, S1 P माइनस T इंटू म्यू, म्यू कितना होता है एयर का, 1 होता है। हाँ, सेकेंड पार्ट क्या है, इतना पाथ इस मीडियम में पास किया है, राइट, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, T इंटू म्यू। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल पाथ when that ray is passing from S1 to P। जरा S2 P के लिए बताओ कितना हो जाएगा, that will be simply S2 P। ठीक है, यहाँ पे S2 P, देखो S2 P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली S2 P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जियोमेट्रिकल पाथ। जियोमेट्रिकल पाथ से जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हो तब क्या मिलता है आपको, ऑप्टिकल पाथ मिलता है, राइट। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? S1 P एक्चुअली व्हाट, S1 P आपका एक जियोमेट्रिकल पाथ है, जब उसके साथ आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया तब आपको क्या मिला है, ऑप्टिकल पाथ मिला है, नहीं। ये आपका जब S1 से P में जब आपका रे जा रहा है, ये आपका टोटल ऑप्टिकल पाथ है। S2 से P में जा रहा है तो टोटल ऑप्टिकल पाथ S2 P इंटू 1, राइट। आप जरा पार्ट डिफरेंस निकालो, पार्ट डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, देखो। S1 P माइनस S2 P करो, मतलब ये अब मैं क्या ले रहा हूँ, S1 P क्या है एक्चुअली ऑप्टिकल पाथ है, S2 P क्या है ऑप्टिकल पाथ है। ठीक है ना, जब भी कोई मीडियम होगा फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस लेना पड़ेगा। दैट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वुड बी n lambda for constructive interference and it is n by 2 lambda for destructive interference where n is odd integer। okay, so S1 P minus S2 P कितना आ जाएगा बताओ जरा यहाँ से। so simply what you will get, S1 P minus S2 P, सॉरी S1 P S2 P, यहाँ पे S1 P S2 P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या किया, दिस माइनस दिस, सो S1 P माइनस S2 P प्लस T इंटू म्यू माइनस 1, T म्यू minus T, that will give you T into mu minus 1, right? Is it clear what I am saying? Yes, sir. इस ये जो ऑप्टिकल पाथ दिस माइनस दिस, दैट इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस। so S1 minus S1 P minus S2 P, then you have this term T mu minus T mu, so T will be common, mu minus 1। okay, जरा ये पाथ बताओ ये कितना हो जाएगा, ये क्या है एक्चुअली जियोमेट्रिकल पाथ। जियोमेट्रिकल पाथ में S1 P जो हो है, S1 P will be exactly same as S2 P, 0. this term will be 0 because this is representing a what actually geometrical path, that's why this part will be how much 0। ठीक है ना,
अब देखो दोनों के बीच में सेंट्रल पॉइंट में पहले कितना था पाथ डिफरेंस, जब आपका कोई ग्लास प्लेट नहीं था, कितना था पाथ डिफरेंस? 0 था, राइट? डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? जब आपका कोई ग्लास मीडियम नहीं था तो पाथ डिफरेंस कितना था? 0 था। अब पाथ डिफरेंस आ गया, देखो कितना पाथ डिफरेंस आ गया? t into mu minus 1. So this point P will no longer be central bright. So central bright point will be shifted. अब सेंट्रल पॉइंट ब्राइट पॉइंट जो है P से अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब आपका S1 के सामने कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम रहेगा, ठीक है? क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि जब रे कोई मीडियम में ट्रैवल करता है, when the light will travel in some medium, it has to be travel some extra path. एक्चुअली S1 से P में जो रे ट्रैवल कर रहा है उसको एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है. Why? Because it is traveling through some medium. So you can mention this point. When light will pass through some medium, it has to be travel some extra path. You can mention. Did you mention? Yes, sir. हाँ. So देखो यहां से P में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो मैं अज्यूम कर रहा हूं जो क्यू पॉइंट है आपका सेंट्रल पॉइंट है. क्यू अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब शिफ्ट हो जाएगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. अब दोनों एक्चुअली बैलेंस हो जाएगा. क्यों बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका मीडियम है, तो यहाँ पे जब लाइट क्रॉस करेगा थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. तो अगर P से थोड़ा ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये डिस्टेंस आपका छोटा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा पाथ था वो क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे S2Q बढ़ जाएगा और S1Q थोड़ा कम हो जाएगा. और S1Q एक्चुअली थोड़ा बड़ा है क्योंकि आपका मीडियम है ना? तो ये दोनों क्या करेगा? बैलेंस हो जाएगा. तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपका S1 के सामने कोई मीडियम रहेगा तो आपका जो सेंट्रल पॉइंट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने एज्यूम किया Q पॉइंट जो है आपका सेंट्रल पॉइंट है और P और Q के बीच में डिस्टेंस है y, ठीक है? बैलेंस मतलब इक्वल. हाँ एग्जैक्टली, इट विल बी इक्वल, ठीक है ना? ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया. आई थिंक आप लोगों को थोड़ा आवाज आ रहा है, नहीं? बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा है? नो सर. नहीं सर, कल आ रहा. नो सर. ओके चलो ठीक. ओके नाउ जब यहाँ पे आपका सपोज मान लो कोई पॉइंट है Q, वो सेंट्रल पॉइंट है. अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जो ये एंगल है आपका, ये आपका मानो थीटा है. ये मानो आपका थीटा है, ठीक है? ठीक है, तो S1 से जब Q में जा रहा है तो इसका ऑप्टिकल पथ कितना हो जाएगा? अगेन सेम ऑप्टिकल पथ, राइट? व्हेन लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम S1 to Q, द ऑप्टिकल पथ विल बी हाउ मच? कितना हो जाएगा बोलो? S1Q minus T, राइट? S1Q minus T into ऑन प्लस T into आपका प्लस है, सॉरी एक मिनट, ये आपका T into म्यू हो जाएगा, ठीक है ना? जब S1 से आपका Q में जा रहा है, ठीक है ना? जब S2 से Q में जा रहा है टोटल ऑप्टिकल पथ कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? सिंपली S2Q, ठीक है ना? क्या मैं S2Q को ये लिख सकता हूँ S1Q प्लस डी साइन थीटा? क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर. हाँ, क्योंकि जो रे यहाँ पे पास हो रहा है तो अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगर आपको याद है तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था? दोनों के बीच में डी साइन थीटा. डी साइन. हाँ, तो डी साइन थीटा प्लस S1Q दैट इज नथिंग बट S2Q, ठीक है ना? तो S2Q को आप क्या लिख सकते हो? S1Q प्लस डी साइन थीटा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई हैव एज्यूम सम पॉइंट
and the path difference between two rays was like d sine theta. So d sine theta was actually what? S on q, and for S2q it was like d sine theta plus S1q. So basically you can write S2q is nothing but d sine theta plus S1q. ठीक है, अब मैंने क्या एज्यूम किया कि Q पॉइंट जो है सेंट्रल पॉइंट, तो सेंट्रल पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम होना चाहिए, ठीक है ना, क्या इतना क्लियर है? Q पॉइंट को मैंने क्या एज्यूम किया, दिस इज सेंट्रल पॉइंट, so for central point both rays should have same optical path, that is ray traveling from S1 to Q, however optical path is there, the ray traveling from S2 to Q, there will be same optical path. So what I can say, this should be equals to this. So I can write for central bright, because Q is what here? Q is central bright. Q is central bright. What I can write? That path S1Q minus T plus T into mu, that should be equals to how much? S1Q plus D sine theta. Right? So this will be cancelled. So I can write that D sine theta equals to, if you combine this term, what you will get basically T into mu minus 1. ठीक है, T into mu minus 1. तो अच्छा, थीटा क्या है, बेसिकली बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा लिख सकते हैं, ये स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, तो थीटा इज बेसिकली स्मॉल, सो इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आई कैन राइट थीटा. Again, in place of theta, I can write tan theta when theta is small. So basically, for small theta value, sin theta can be converted to tan theta. T into mu minus 1. Okay. So it means, is it clear what I'm saying? So when theta is small, sin theta will be theta. And when theta is small, again, you can write theta equals to tan theta. So simply, it means for small theta value, you can write sin theta equals to tan theta. And can you please tell me what will be the tan theta? By P upon D. Tan theta will be basically T into mu minus 1 divided by what? D. And tan theta, if you see, tan theta for this triangle, tan theta will be perpendicular divided by base. So perpendicular is basically Y, base is capital D. So I can write the position of central bright will be how much? That will be capital D by small d, T into mu minus 1. So this is the position of central bright. So you can see the shift of central bright will be depends upon the thickness of this glass plate as well as the refractive index of this glass plate. Okay. Is it clear? Is it clear to all what I'm saying? Yes, sir. Yes. Okay. तो बेसिकली आपको एक ही चीज याद रखना है, जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं तो बेसिकली हमको ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा दो रे के बीच में. अगर एयर है तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, है ना, ये स्ट्रेटेजी जो डिस्कशन हुआ था. बट आज आपको क्यों ऑप्टिकल पार्ट काउंट करना पड़ रहा है, फोर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका मीडियम आ गया म्यू, है ना. ये स्टडी म्यू वाज ऑन, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम. सो कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ nth bright fringe? व्हाट विल बी द पोजीशन? क्या हो जाएगा बताओ? पोजीशन ऑफ nth bright इज नथिंग बट, अच्छा नॉर्मल केस में क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, इफ यू सी, है ना. अच्छा अगर कोई मीडियम नहीं होता है तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट का क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई डी, राइट. नाउ देयर विल बी शिफ्ट, सो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट विल बी सिंपली एन डी लैम्डा बाई डी प्लस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी टी म्यू माइनस स्मॉल. इसका मतलब क्या है कि हर फ्रिंज जो है, हर एक जो फ्रिंज का जो पोजीशन है, कितना अमाउंट शिफ्ट हुआ है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस 1. सेंट्रल ब्राइट कितना शिफ्ट हुआ है,
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस ऑन. फर्स्ट ब्राइट कितना शिफ्ट हो गया, दिस प्लस कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना. तो हर एक फ्रिंज बेसिकली कितना अमाउंट शिफ्ट किया है, बताओ कितना अमाउंट शिफ्ट किया है, दैट इज डी बाई स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस ऑन. ओके okay, now can you please tell me what will be the fringe width for this case? Will there be any change in fringe width? फ्रिंज विथ बीटा कितना हो जाएगा इन केस में, बताओ. अच्छा ये स्टार्ट है कितना था आपका, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, राइट. यस. इसमें कोई चेंज होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. सो क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हर एक का पोजीशन शिफ्ट हुआ है, बट दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है. दोनों दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में जो सेपरेशन है, इट इज लाइक कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, इट इज नॉट चेंजिंग. बट क्या हुआ है, हर एक फ्रिंज का पोजीशन शिफ्ट हुआ है. वो कितना शिफ्ट हुआ है, कैपिटल डी बाय स्मॉल टी इंटू म्यू माइनस ऑन. टी क्या है, थिकनेस जो है आपका ग्लास प्लेट का. ठीक है, ओके. सो इट विल बी व्हाट, बेसिकली इट विल बी वाई एन प्लस ऑन बी माइनस वाई एन बी. ओके ठीक है. तो यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखोगे, n प्लस ऑन, ठीक है ना. जब इसका पोजीशन लिखोगे, इसके जगह पे एज इट इज लिखोगे. तो अगर कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन से, यू विल अगेन गेट कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी. सो यू कैन मेंशन देयर शुड नॉट बी चेंज इन फ्रिंज विड्थ व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस एनी मीडियम or any medium in front of slit. There will be no change in fringe width. ठीक है. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So this is like position of nth bride. Okay. Now can you please tell me the position of nth dark. क्या हो जाएगा, I N D, that will be how much? कितना हो जाएगा बताओ. जो एयर में उस वो प्लस कितना होता है एयर में, 2n minus 1 हाँ d lambda by 2d. हाँ 2n minus 1, okay, d lambda by 2d, right, plus d by small d t mu minus 1, right. So n can be what here, n can be like 1 2 3 so on, right. So again you from here also you can infer that there will be shift of each position of each dark also by an amount of what, this. Okay, but again if you calculate the fringe width from this equation also, you will get same value, that is capital D lambda by small capital D lambda by small d. Okay, is it clear, this concept clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. if it is clear, let us solve one problem. ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने सब. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let us solve problem number 1. Okay, so suppose you have a young double slit experiment and this is S1 S2. Okay, this separation is D. You have a screen at capital D distance away, and also given that capital D is much greater than small d. Okay, and you have introduced a glass plate in front of, they have introduced a glass plate in front of
S1, the refractive index of this glass plate is given, that is 1.5. ओके, ठीक है। अब क्या है, जब इसका ये जो ग्लास प्लेट S1 के सामने जब इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ है, जो सेंट्रल ब्राइट का जो पोजीशन है वो शिफ्ट होकर कहाँ जा गया है, फिफ्थ ब्राइट का पोजीशन में चला गया। You know the position of fifth bright, right? That is 5 capital D lambda y small d when there is no glass plate. So what is happening when they perform this experiment without any glass plate? They got some pattern. Now they introduce a glass plate in front of S1 slit. The refractive index of this glass plate is how much? 1.5. Now when they introduce this glass plate, the position of central bright is basically shifted to पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट कहां चला गया, जब जो फिफ्थ ब्राइट का जो पोजीशन है वहां पे चला गया, ठीक है ना। तो आपको थिकनेस निकालनी है इस ग्लास प्लेट का। आपका ये भी गिवन है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज गिवन, दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो दे हैव परफॉर्म फर्स्ट दिस एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी glass plate, and they got some fringe, right? Now when they introduce this glass plate in front of S1 having refractive index 1.5, the central bright is suddenly shifted to fifth bright. वो fifth bright कौन सा है, without any glass plate, मतलब central bright कौन सा पोजीशन ले रहा है, fifth bright का पोजीशन ले रहा है। और fifth bright कौन सा है, the position that is in the absence of glass plate, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। ओके, सो दे हैव प्रोवाइडेड ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass and the wavelength of light they have used. Okay, so very simple question. Now can you please tell me the position of fifth bright क्या होता है, बताओ। हाँ, क्या होता है भाई, पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट? lambda by d. 5d lambda exactly, 5d lambda by small d, right? This is the position of fifth bright. Now when they introduce this glass plate, the central bright position will be where? Central bright कहाँ पे होगा भाई, बताओ। d capital D by small d, t into mu minus 1. Yes, sir. So according to given condition, this should be equals to this. 0 वो बराबर। हाँ, दोनों बराबर हो जाएगा ना। So according to given condition, capital D by small d, t into mu minus 1 should be equals to 5d lambda by small d. Okay, so capital D will be cancelled, small d will be cancelled. Okay, so you will basically get t will be how much, t will be 5 lambda divided by mu minus 1, and they have given this value, so it will be 5 into, this is how much, lambda is 5000 angstrom, so you can convert it into meter, so you have to multiply by 10 to the power minus 10 divided by mu minus 1. Mu is how much, mu is your 1.5, so mu minus 1 will be how much, this will be simply 0.5. Okay, is it clear? So if you calculate this value, I have calculated, you can check also, t will be basically 5 into 10 to the power minus 6 meter. So this will be the thickness to shift this position of central bright to the position of fifth bright. Okay, ठीक है, is it clear? Sir. Yes, sir. Okay. Okay, again, similar kind of question. So now, excuse me. So again, same set of S1, S2, D, and separation between screen and slit, that is capital D. Excuse me. Capital D is much greater than small d. Now they ask
what will be the minimum thickness? So suppose this glass plate having thickness T and refractive index P. So what will be the minimum thickness? What will be the minimum thickness of this glass plate so that the central point will be dark? So what will be the minimum thickness so that central point will be dark? Okay, कितना थिकनेस होना चाहिए? अच्छा, यहाँ से जो रे यहाँ जा रहा है और यहाँ से जो रे यहाँ पे जा रहा है, दोनों इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बताओ? अभी कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने. When ray is passing from when ray is passing from here to here and here to here, the part difference between S1 to P and S2 to P, that is, you know, that is how much part difference or optical part difference will be T into mu minus 1. Okay, and for dark fringe, that part difference would be of the order of how much? 2n minus 1 lambda by 2, right? 2n minus 1 lambda by 2, where n is like on 2, 3 and so on, right? Am I correct? Like it will be a lambda by 2 or 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 or so on, right? यही तो कंडीशन होता है ना डार्क फ्रिंज के लिए, नहीं? जब आपका पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 सो ऑन, और फेज डिफरेंस लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई सो ऑन. सो दिस इज द कंडीशन. आपको मिनिमम थिकनेस के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए? मिनिमम थिकनेस के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0. n 0 अलाउड नहीं ना, n लाइक 1 N 1. for minimum thickness, okay, n should be 1. It means what I can write, that T in place of T I will write T minimum into mu minus 1. That should be equals to how much? When you substitute n equals to 1 here, you will get basically lambda by 2. It means the minimum thickness of this glass plate should be how much? Lambda by 2 into mu minus 1. Okay. So in exam, they can provide you that value of lambda and mu, and they will ask that value. Okay, T minimum value. So this should be the minimum thickness. Okay. Is it clear? Yes, sir. इतना क्लियर है आप लोगों को? If it is clear, Yes, sir. if it is clear, then we'll go to that next step. That will be a bit hard. Shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को? Yes, sir. Are you feeling comfortable, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर Yes. सर जो पिछला प्रॉब्लम में सर ये एन डी लिम्डा अपॉन डी इक्वल डी वाई कैपिटल डी वाई स्मॉल डी टी इनटू मी माइनस 1 जो इक्वल की सर ये कांसेप्ट समझ में कौन सा वाला प्रॉब्लम है बोल रहा हूँ? जस्ट पहले जो प्रॉब्लम की सर, ये वाला प्रॉब्लम अभी जो किया था? नहीं सर इसके पहले जो इसके पहले. ओके. थिकनेस ऑफ टी 5d लैम्डा बाय डी वो बोल रहे हो? यस सर यस. हाँ, देखो, जब बिना ग्लास का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है तो एक आपका पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट मिला है, नहीं? बिना ग्लास प्लेट का पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट कहाँ पे होता है? 5d लैम्डा बाय डी पे होता है ना? यस सर. तो बिना ग्लास की जब एक्सपेरिमेंट किया है, पोजीशन उन्होंने नोट किया है फिफ्थ ब्राइट का, दैट इज 5d लैम्डा बाय डी. ठीक है. अब जैसे ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया गया है तो सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन शिफ्ट होकर फिफ्थ ब्राइट का पोजीशन में चला गया है ना? तो आपको पता है सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन क्या होता है जब ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करता है? वो कितना होता है? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी टी इनटू म्यू माइनस 1. सो दैट शुड बी इक्वल टू 5d लैम्डा बाय डी. हाँ, 5d लैम्डा बाय डी वो क्या है एक्चुअली? वो है आपका पोजीशन जब आपका ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था.
ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया। Okay. Now there is another interesting problem. See, this is kind of, you can say that this is kind of derivation also, but they will provide you that value and they will ask you that problem. So see, let us enjoy this problem. So you have a, oh, sorry. So again, you have a two slit S1, S2. Okay, separation is D. Okay, and now they have introduced two glass plate, thickness that is T1 mu1 in front of S1. In front of S2, they have introduced a glass plate having thickness that is T2 and refractive index is mu2. ठीक है ना? अब दोनों के सामने ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? And let us take, and this is your screen, okay, at a separation of capital D. ठीक है? अब P को सपोज मानो आपका central point, but it cannot be central right now because there should be some phase difference, right, between these two rays. Okay, ठीक है? अब मैंने क्या अज्यूम किया, जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हो रहा है कोई मीडियम में परफॉर्म हो रहा है, मानो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानो, ठीक है? दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मिंग एट सम मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है? अब ये पी सेंट्रल पॉइंट है, बट ये सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल ब्राइट नहीं होगा क्योंकि आपका ग्लास प्लेट आ गया है, राइट? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो पॉइंट Q है इट विल बी सेंट्रल पॉइंट. Point Q will be central point and distance between P and Q, that will be phi. Okay. Now first I'll find that position of central bright. Okay. Position of central bright. Then I'll calculate the expression for nth bright as well as nth dark. Okay. जरा एक चीज बताओ, S1 से जब Q में जा रहा है, अगेन आई यूज सेम कॉन्सेप्ट, S1 से जब Q में जा रहा है ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा बोलो? S1 से इसमें जा रहा है तो ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा बताओ? इट विल बी लाइक S1Q माइनस T1 इंटू म्यू. अब यहाँ पे म्यू आ जाएगा क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हो रहा है किसमें परफॉर्म हो रहा है? म्यू मीडियम में परफॉर्म हो रहा है, राइट? एंड यू विल हैव अनदर टर्म दैट विल बी T1 mu1. So I assume that Q point is central bright. So optical path between S1 to Q, that should be equals to S2 to Q, right? Okay. So S1 से Q में ऑप्टिकल पाथ जो रे है दो मीडियम में पास हो रहा है. एक तो आपका म्यू मीडियम में पास हो रहा है, कितना डिस्टेंस पास हो रहा है? S1Q minus T1. Okay. So optical path for this amount of path will be S1Q minus T1 into mu. You have to multiply by mu because experiment is performing at some medium. Then you have another path that will be T1 mu1. So this will be your total optical path when ray is traveling from S1 to Q. Similarly, I can write when the ray is traveling from S2 to Q, that optical path will be how much? Anyone? So I can write like S2Q minus T2 into mu, right? Into mu plus T2 mu2. This will be the optical path when ray is traveling from S2 to Q. Okay. Is it clear? सर एक बार फिर से ये वाला बता दो. हाँ ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. सो आपका दो स्लिट है, दो स्लिट के सामने दो ग्लास प्लेट आ गया, राइट? तो एक S1 के सामने जो ग्लास प्लेट है उसका थिकनेस T1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है. S2 के सामने T2 mu2 है. होल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है कोई मीडियम में हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है. अब जो P है सेंट्रल पॉइंट, बट इट विल नो लॉन्गर बी सेंट्रल ब्राइट. सेंट्रल ब्राइट विल बी शिफ्टेड समवेयर हियर. सो आई हैव assumed it will be shifted at point Q and distance between P and Q, that is y. So the optical path, the ray traveling from S1 to Q, the optical path will be how much? So the ray is traveling in two medium basically when it is traveling from S1 to Q.
एक आपका म्यू मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, वो कितना अमाउंट ट्रेवल हो रहा है, S1Q minus T1. S1Q minus T1 amount of length is traveling in medium mu. So optical path will be S1Q minus T1 into mu. Then it is also traveling in this medium. For this optical path will be T1 mu1. So you have to add these two terms when ray is traveling from here to here. Okay, you understood now why I have multiplied by mu? Because medium is no longer air here. So if they gave you that experiment is performing at air, then you have to multiply by 1 here. And similarly from S2 to Q, so it is traveling again in two medium. So on length is like S2 minus S2Q minus T2. That length is basically traveling in medium mu. So optical path will be S2Q minus T2 into mu. And another amount, that is T2, is traveling in mu2. So you have to multiply T2 mu2 and you have to add this. So this is the optical path for both cases. Since I have considered that Q point is central bright, so these two optical paths should be same. Is not it? Am I correct? Yes, sir. So Yes, sir. what I can write like S2Q minus T2 into mu plus T2 mu2. That should be equals to S1Q minus T1 into mu plus T1 mu1. Right? I can write because these two optical paths will be same. Now I'll rearrange this equation. So if I rearrange this equation, I'll bring these two terms together, S2Q and S1Q. So if I arrange these two terms, or if I combine these two terms, what I'll get basically S2Q minus S1Q into mu. That should be equals to how much? T1 mu1 plus T2, sorry, that should be T2 mu2. And you have another term that will be T2 minus T1 into mu. So if you rearrange this, you will get basically this kind of scenario. So I combine these two terms, S2Q and S1Q, I'll get like this. And you have T1 mu1. And if you bring this T2 mu2 on the right hand side, you will get, so this term will be, this term will be like T1 mu1 minus T2 mu2. Sorry, extremely sorry. This should be T2 mu2. So T1 mu1 minus T2 mu2. Then you have this term T2 mu. If you bring on the right hand side, you will get T2 mu plus, and you have T1 mu minus already. So if you combine, you will get like this. So S2Q minus S1Q into mu, that should be equals to T1 mu1 minus T2 mu2, and you have T2 minus T1 into mu. Is it clear to all? Is it clear? Yes, sir. Yes, Everyone? sir. Okay. Now can anyone please tell me what will be this S2Q minus S1Q? S2Q और sorry, A distance और A distance की difference कितना होता है? So S2Q and S1Q, this is basically geometrical path, and you know path difference. This path difference should be how much? D sin D sin theta. theta. Exactly. So it should be D sin theta into, you have mu. That should be equals to T1 mu1 minus T2 mu2, and you have second term, that is T2 minus T1 into mu. Okay. So again, I'll use in place of sin theta, what I'll use tan theta, right? And you know what is tan theta? Tan theta will be how much? I by capital D, right? So I'll basically get small d in place of sin theta. I'll use tan theta. Tan theta will be this distance perpendicular divided by base. Base is how much? Base is capital D. So I'll use basically I by capital D. Okay. And you have mu here. That should be equals to T1 mu1 minus T2 mu2 plus T2 minus T1 into mu. क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. सबको क्लियर है? Are you Yes, sir. Are you enjoying, everyone? This is really good question actually. Now, if I
If I simplify, I'll get that position of central bright. So central bright क्या हो जाएगा? Y equals to कितना आ जाएगा बताओ? It will be like capital D by small d, capital D by small d into mu, and you will have T1 mu1 minus T2 mu2 plus T2 minus T1 into mu. So this will be the position of central bright. This will be the position of central bright. Capital D by small d mu, T1 mu1 minus T2 mu2 plus T2 minus T1 into mu. Is it clear to all? So this is the position of central bright. Acha, can I ask one simple question? So will this central bright always be upward, or can it be downward also? Can it be downward? Will this central bright always be in upward direction, or it can be downward also? Upward direction. No, it can be downward also. You see, when this factor, अगर ये आपका फैक्टर somehow T2 mu2 ये आपका बड़ा हो गया है ना, सपोज मान लो एक जनरल केस ले लो, आप एक जनरल केस ले लो, सपोज मानो आपका दोनों का थिकनेस सेम है, लेट अस एज्यूम T2 इक्वल्स टू T1, मैं क्या अज्यूम किया, T2 इक्वल्स टू T1 बट mu2 ग्रेटर देन mu1, तो T2 इक्वल्स टू T1 में क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपका T1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 कॉमन आ जाएगा, अब mu1 माइनस mu2 पड़ा रहेगा, mu2 mu1 से बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. सो व्हाट एवर this is your correct expression, so whatever value they will give, so if you put it, if you are getting negative value, it means that position will be shifted downward. If you are getting positive value, then obviously that position will be shifted upward. So it's not always true that central bright will always be shifted upward when you have two glass plate. अगर एक ग्लास प्लेट गिवन है, यहाँ पे गिवन है S1 के सामने, तो ऑलवेज आपका क्या होगा, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा. अगर आपका एक ग्लास प्लेट इधर शिफ्ट, इधर गिवन है S2 के सामने, तो आपका जो सेंट्रल ब्राइट किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा. अगर दो ग्लास प्लेट गिवन है तो आपका डिपेंड करेगा इस सारे फैक्टर के ऊपर. क्या इतना क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट करूं, अगर एक ग्लास प्लेट है S1 के सामने, ठीक है, एक ही ग्लास प्लेट है, तो आपका अपवर्ड शिफ्ट होगा. अगर एक ग्लास प्लेट है बट वो S2 के सामने, तो आपका डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. अगर दो ग्लास प्लेट है तो ये डिपेंड करेगा आपका T1 mu1 T2 mu1 mu2 के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि किधर शिफ्ट होगा. क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? Sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, if it is clear, then please solve one question I am giving. Okay, and this question I think asked in 2019 JAM. Okay. Okay, shall I erase? Yes, sir. So are you people getting noise? No, sir. No, right? Okay, then it's fine for me. Okay. So let us solve this question. So what they have given, there is a two slit. Okay, S1 and S2. Okay, and there is a screen at distance capital D. Okay, and they have used two glass plate having same thickness. Thickness I'll tell you. In front of two slit, they have used two glass plate, two different glass plate. मतलब दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, बट दोनों का जो थिकनेस है दैट इज सेम. दे हैव सेम थिकनेस T, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लाइक N1 N2. ठीक है, अब थिकनेस जो है वो मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को. थिकनेस जो गिवन है 6 × 10⁻⁻⁶
मीटर, ठीक है। एंड जो लाइट यूज किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, उसका जो वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर, ठीक है। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है ना, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, S1 S2 दो ये है, दो आपका ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस किया गया है, दोनों का थिकनेस कितना है 6 × 10⁻⁶ मीटर है। वेवलेंथ जो लाइट का यूज किया गया है 550 नैनोमीटर है, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। अब जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, 7th ब्राइट का जो पोजीशन है वो सेंट्रल ब्राइट में आकर शिफ्ट हो गया। 7th ब्राइट का जो पोजीशन है वो कहां पे आ गया? सेंट्रल राइट। सेंट्रल ब्राइट पे आ गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मॉड ऑफ n1 - n2, क्या आ जाएगा? सो अगेन आई विल यूज जनरल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल राइट। अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा, देखो, पहले मैं सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन निकालूंगा, है ना। मैं इन जनरल क्या कर रहा हूँ, सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन निकाल रहा हूँ, है ना, जब ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन आपको मिल गया है तो उसके साथ जो एन डी लैम्डा बाई डी ऐड करोगे तो आपका 7th ब्राइट का पोजीशन, nth ब्राइट का पोजीशन मिल जाएगा। तो पहले मेरा जॉब जो है सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन निकालना है। अगर सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन आपको आ गया तो यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ब्राइट or location of any bright fringe. So what I'll use, basically I'll assume, so let us assume this is your central point P, and I'll assume some point Q that is central point. So Q can be upward or downward, it depends upon this parameter T n1 n2, and obviously in this case Q क्या है आपका डाउनवर्ड की तरफ है, बट मैं जनरल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, इसी से आपका आ जाएगा, कोई चिंता होने का जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट, कोई मैं पॉइंट एज्यूम किया Q, वहां से मैं सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन निकालूंगा फर्स्ट, ठीक है। पोजीशन बताओ कितना हो जाएगा? सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन क्या आ जाएगा बताओ? जब S1 से Q ट्रेवल हो रहा है कितना है ऑप्टिकल पाथ? बताओ आप लोग बताओ। S1 से Q जब ट्रेवल हो रहा है कितना ऑप्टिकल पाथ है? सो इट विल बी लाइक S1Q Q minus T1 इंटू कितना है, ऑन है क्योंकि फिर आपका क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा T इंटू n1। हाँ, S2 से जब Q में ट्रेवल हो रहा है कितना हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ? S2Q माइनस T प्लस n2, राइट। अब सेंट्रल ब्राइट के लिए दोनों सेम है ना। तो इफ यू इक्वेट दिस, आई मीन S1Q minus T plus Tn on, that should be equals to S2Q minus T plus Tn2, right? Am I correct? Okay, so this T will be cancelled, right? This T will be cancelled and I'll get basically I'll get what? S2Q minus S1Q. That will be how much? That will be T into N1 minus N2. Am I correct? T into N1 minus N2. S2Q minus S1Q. So I bring this term T into N2 on the left hand side, और I have rearranged. So S2Q minus S1Q अगर करोगे तो आपको ये मिलेगा, देखना, चेक करना। So S2Q minus S1Q that will be T into N1 minus N2. S2Q minus S1Q कितना हो जाएगा बताओ? Again d sin theta, right? S2Q minus S1Q will be how much? This path S2Q S1Q कितना है इन दोनों के पाथ में डिफरेंस? d sin theta, right? And d sin theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? d tan theta, tan theta कितना हो जाएगा? सपोज मान लो ये डिस्टेंस y है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? d into y by capital D, right? Am I correct? And that should be equals to T N1 minus N2. ठीक है, तो यहां से आपका सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन मिल जाएगा, कितना है वो आपका? कैपिटल D T by स्मॉल d N1 minus N2,
ठीक है, अच्छा अब बताओ सेंट्रल सॉरी सेवन ब्राइट का पोजीशन क्या हो जाएगा? I7B बताओ आप लोग। दैट विल बी 7D lambda by small d plus by D by D small d and t D. into n1 minus n2। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब एक चीज Yes, sir. बताओ, ये सेंट्रल ब्राइट का लोकेशन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। सेवन ब्राइट का पोजीशन कहाँ पे आ गया? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के लिए y कितना है? सेंट्रल ब्राइट के लिए y कितना है? 0 है ना। सेंट्रल ब्राइट मतलब लोकेशन कहाँ पे हो भाई? ये सेवन ब्राइट का पोजीशन शिफ्ट होके कहाँ पे आया है? सपोज मान लो आपका कहीं पे सेवन ब्राइट था, वो पोजीशन आपका शिफ्ट होके कहाँ पे आया है? सेंट्रल ब्राइट पे। और सेंट्रल ब्राइट के लिए y कितना है? 0 है। तो ये जो y है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट 7D lambda by d by small d t into n1 minus n2 that is 0। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? Clear है sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. okay, now can we calculate that mod of n1 minus n2? So mod of if you rearrange it, you will basically get d by small d t into n1 minus n2, that should be equals to minus 7 d lambda by small d. So d will be cancelled, this d will be cancelled. So basically if you take mod, then this minus will be cancelled. So basically mod of n1 minus n2 will be how much? 7 lambda by t. Okay, so now lambda and t they provided, that value is how much? So this will be 7 lambda was how much? 550, right? 550 nanometers, so it will be 550 into 10 to the power minus 9 divided by t was how much? 6 into 10 to the power minus 6, I think. 6 into 10 to the power minus 6 meter. Okay, so if you calculate it, you will get basically 0.64. To calculate it, you will basically get 0.64. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने लिख लिया इतना? Yes, sir. Shall I erase? Sir. Yes, sir. Are you people enjoying optic class? Yes, sir. Yes, sir. बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? नहीं, sir. No, sir. Okay. Okay. Now another interesting problem we'll do. Then we'll proceed that thin film interference. So let us solve one more problem. This is also good question actually. So again, you have a two slit. Okay. आप लोग नंबर देते रहो ना क्वेश्चन का, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। You have a two slit again, S1, S2. Okay. Separation is D. Okay. And you have a screen. This distance is capital D again. Okay. And this point is central point. ठीक है, दिस इज P इज योर सेंट्रल पॉइंट। अब क्या है, S1 के सामने आपका एक सपोज मान लो मीडियम ग्लास प्लेट रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू गिवन है, दैट इज म्यू इज हाउ मच? 1.5 and thickness is of this glass plate is how much? Thickness is like 5000 lambda by 3। ठीक है, now
क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P before and after introducing this glass plate. Okay, so you have a same kind of setup. S1, S2, two slits are there. Okay, and separation is small d. Separation between slit and screen, that is capital D. In front of S1 there is a glass medium is placed. The refractive index of this glass plate is 1.5. Thickness is 5000 lambda by 3. Okay, of this glass plate. Now question is, what is the question? And question is really interesting. What is the intensity at point P before and after introducing this glass plate? So first we have to calculate that intensity at point P before introducing glass plate. ठीक है, तो अगर कल का आप लोगों को अगर ये याद है तो कोई पॉइंट में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? सो सपोज अगर कोई आपका कुछ गिवन नहीं है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है रे का जो पास हो रहा है वो ए है, S2 से जो रे पास हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, अगेन है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, वाई नेट बताओ, कल हम लोगों ने किया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोसाइन डेल्टा, राइट, ऐसे कुछ किया था ना हम लोगों ने। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका दोनों रे ही सेम है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कोसाइन ऑफ डेल्टा। ये कब है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका पहले जो इंटेंसिटी में कैलकुलेट कर रहा हूँ बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ग्लास प्लेट, ठीक है। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2A स्क्वायर ऑन प्लस कोसाइन ऑफ डेल्टा, राइट, I can write because this A square plus A square is 2A square. So 2A square will be common, you will get 1 plus cosine delta. So further I can write like 4A square cosine of 1 plus cos theta is nothing but 1 plus cos theta कितना होता है, 2 cos square theta by 2, right? So 1 plus cos delta will be 2 cos square delta by 2. So I can write, you have already 2, you will get 2 from here, you will get 4A square cosine square delta by 2, ठीक है। अच्छा, जब कोई आपका यहाँ पे ये नहीं था, ग्लास प्लेट नहीं था, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा S1P और S2P के बीच में, जब आपका कोई ग्लास प्लेट नहीं था, 0 हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस अगर 0 है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस अगेन 0। पार्ट फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। अगर पार्ट डिफरेंस 0 है, ऑब्वियसली आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन से, डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। So अगर डेल्टा 0 है, cos स्क्वायर 0, that will be 1. So basically you will get 4A square, ठीक है। ये आपका ये केस है कब, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ग्लास प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप A लिख सकते हो, ये आप इस तरह से लिख सकते हो, y नेट ब्रैकेट में बिफोर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस किए हो तो मैं एज्यूम लिख रहा हूँ इसको नोट कर रहा हूँ, आई नेट आफ्टर। तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, अब आपका कुछ डेल्टा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये लिखूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, A स्क्वायर ये सारे सेम रहेगा। जैसे आपने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करोगे तो यू विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ डेल्टा, you'll get some finite value of delta that we have to calculate. So I'll write like 4A square cos square delta by 2. Now to calculate this ratio, our job is to calculate that phase difference. तो हमको पता है P अगर सेंट्रल पॉइंट है तो पार्ट डिफरेंस कितना आता है, बोलो पार्ट डिफरेंस कितना आता है, T इंटू म्यू माइनस 1, इतना तो आता है पार्ट डिफरेंस ना। P आपका क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, T इंटू म्यू माइनस 1। फेज डिफरेंस डेल्टा कितना आ जाएगा,
2 pi by lambda into T mu minus 1, because phase difference is nothing but 2 pi by lambda into path difference. Okay. Now everything is given. Now we see 2 pi by lambda. T is how much? T is like 5000 lambda by 3, right? And you have mu is 1.5, so mu minus 1 will be 0.5, so I can write like 1 by 2, because 0.5 is nothing but 1 by 2. So from here I can write 2 will be gone, lambda will be gone, so this will be basically 5000 lambda, so sorry, 5000, this will not be lambda, this will be pi by 3, 5000 pi by 3. Okay, so now I got delta. So delta by 2 will be how much? Delta by 2 will be how much? It will be 2500 pi by 3. Okay. So I net after introducing glass plate will be basically 4a square cosine square delta by 2, and delta by 2 I have calculated, that is 2500 pi by 3. 2500 pi by 3 का वैल्यू कितना होता है? Anyone? How much will be the value? किसी का बताओ? हाँ? Okay, this will basically you will get 1 by 2. So cos square, this will be, I mean you will basically get cos pi by 3. And you know cos pi by 3 is how much? Cos pi by 3 is basically 1 by 2. So cos square will be 1 by 4. You can calculate this value. If you calculate that cos square 2500 pi by 3, this value if you calculate, you will basically get 1 by 4. You will get 1 by 4, and you have 4 here. So this 4 and 1 by 4 will be cancelled. So I net after introducing glass plate will be how much? It will be a square. So I can write like I net after introducing glass plate. So like I after, it will be how much? Simply it will be a square. Okay. So that ratio will be I net before by I net after. It will be how much? 4a square before का, और after कितना हो गया? A square. So it will be cancelled. You will basically get 4. क्या इतना क्लियर है भाई आप लोगों को, या कोई डाउट है इसमें? सर वो डेल्टा वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू टी इनटू म्यू माइनस 1 वो कैसे लिया? हाँ, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? दो रे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होता है? टी इनटू म्यू माइनस 1. अच्छा, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? फेज डिफरेंस रिलेशन क्या होता है? फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस. ठीक है. एंड इफ यू आर फेसिंग दिस, अच्छा आप लोगों को ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? कॉस स्क्वायर 2500 पाई बाय 3 कितना 1/4 क्यों होता है? इसमें प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर 833 पाई प्लस पाई बाय 3. देखो इसको कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा 2500 पाई बाय 3. सो कॉस n पाई प्लस पाई बाय 3 कितना है? यहाँ पे ऑड पाई है, तो बेसिकली यू विल गेट माइनस कॉस पाई बाय 3. बट यहाँ पे आपका क्या है? कॉस स्क्वायर है, तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट cos square pi by 3, and that pi by 3 value is basically how much? 1 by 2. So cos square 1 by 2 will be 1 by 4. So cos square इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2500 पाई को आप इस तरह से लिख सकते हो 833 पाई प्लस पाई बाय 3. ओके, एंड यू नो cos n पाई प्लस पाई बाय 3 दैट विल प्रोवाइड यू अगेन cos पाई, बट यहाँ पे आपका माइनस cos पाई होगा, बट cos स्क्वायर है उसीलिए अगेन आपको क्या मिलेगा? cos स्क्वायर पाई बाय 3 मिलेगा, एंड cos स्क्वायर पाई बाय 3 इज नथिंग बट 1 by 4. क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बताओ कोई डाउट है तो? नो डाउट सर. नो डाउट, राइट? ओके.
Okay. Now we are going to discuss the another part of interference pattern, that is thin film interference. कभी आप लोगों ने नोटिस किए हो सॉफ्ट बबल को? सॉफ्ट बबल को कभी, हाँ, वो कितना कलरफुल होता है, राइट? क्यों होता है? ड्यू टू इंटरफेरेंस. ठीक है, तो basically when you will you have some soft bubble or oil or even alcohol on the surface, and if you incident some white light, then it may be colorful, and that colorfulness basically used to come from interference pattern. Okay, so now we are going to discuss this important part, and that is thin film interference. So let us discuss this. Okay. Okay, so suppose you have a thin film. Suppose you have a thin film, okay, and thin film can be like your bubbles of or oil or alcohol, even water also. And let us assume, so this is your thin film of bubble or whatever that thin film is. Let us assume the thickness of this thin film is small t. So this is the thickness, and also assume the refractive index of this thin film is mu. Okay, so इस साइड क्या है आपका? इस साइड भी आपका एयर है, इसका ऊपर भी क्या है आपका? एयर मीडियम है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? सपोज मान लो आपका कोई बबल है और समथिंग दैट इज थिन फिल्म हैविंग थिकनेस स्मॉल t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ओके, एंड लेट अस अज्यूम दिस इज द नॉर्मल. ओके, अच्छा, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये वाला पार्ट फिर आपका न्यूटन स्ट्रिंग में भी आएगा, सेम तरह की है ना, तो मैं वहां पे आप लोगों को पूछूंगा. सपोज मान लो एक लाइट आ रहा है, a light is incident at some angle I. Okay, at some angle I, and let us denote this point is A. Okay, so after making incident here, there will be two parts. So some of the portion will be reflected, right, and some of the portion will be refracted. Some of the portion will be refracted. It will no longer be straight line. There will be some deviation. Okay, please make some deviation. Okay, so let us denote this point is B. So this angle will be how much? It will be I. It will be I, right? This angle will be how much? This angle will be R. Okay, so when this ray, that refracted a ray, is striking this surface, this interface, then again there will be some what? A reflection. Again there will be some reflection. Okay, now these two ray will make superposition. This two ray will make superposition, and it can provide you bright or dark fringe depending upon their path difference or phase difference. Okay, so again I am repeating, you have some thin film having thickness t, refractive index mu. A ray is passing or making incident at angle I, so there will be two parts. Some of the portion will be reflected, some of the portion will be refracted. That refracted ray will again strike this interface and it will make reflection. So you have two ray, they will superimpose, and they can provide you either bright fringe or dark fringe depending upon path difference or phase difference. Okay, now before going further proceeding, let us make that point. So let us give this point as C. Okay, this as a D. Okay, let us make a normal from here to here. Let us make a normal from this point to this point, and let us keep this name as F.
So A, B, C, D. Let us give this as a E. This will be F. And let us take this middle point as a Z. This point as a G. Okay. So we can give some arrow also here. We can give some arrow also. Okay. Now, the interference pattern will be depend upon their optical path difference. Now, how much will be the optical path difference between these two rays? कितना हो जाएगा बताओ? Optical path difference. Anyone? Okay. Now, can anyone please tell me what will be this angle? ये angle कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा ये? Anyone? कितना हो जाएगा? I नहीं, R हो जाएगा. देखो, ये एंगल कितना है? 90 है, राइट? ये कितना है आपका? 90 है, राइट? ये कितना है? 90 माइनस आर, राइट? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा. अगर ये वाला ट्रायंगल को आप एज्यूम करोगे, ठीक है ना? So this angle plus this angle plus this angle should be equals to how much? 180. This you have 90. This is, since this is R, so this will be how much? 90 minus R. Okay. So to make 180, this angle should be how much? R. So if this is R, then this will again be R because of, or you can say the from the concept of law of reflection. Is it clear? Yes, sir. क्योंकि ये जो रे इंसिडेंट हो रहा है फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. एंड इवन यू कैन फाइंड ऑल्सो. ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रे? कितना है? यहां तक तो दोनों सेम आया है, फिर डिवाइड हुआ है, यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ किए हो, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो होगा, दिस पाथ BC plus CD minus BF, that will be the optical path difference. You made a normal, so up to B point both rays came at the same time, but after that they divide, and you made normal from D to F. So optical path difference between these two rays, emerging rays, will be how much? BC plus CD minus BF, that will be total optical path difference. Now please note, BF, this ray is traveling in air, so for that no need to multiply it by mu. But when we'll calculate this path BC plus CD, you have to multiply with mu. So if you calculate the optical path difference between emerging rays, so total optical path difference, what I can write? Optical path difference will be how much? It will be like mu into BC plus CD minus B into F. So this path minus this path, but we have to multiply mu with this path because this ray is traveling in this medium, mu medium, but this ray is traveling in air, so no need to multiply with mu, because for this case mu is how much? Mu is how much? That is 1. Now our job is to calculate BC and CD with given parameter. So how will calculate BC? कैसे calculate करेंगे BC को बताओ? So if you assume this triangle, see this angle, this triangle. From this triangle, let us give that name also, then it will be clear. For BOC triangle, from BOC triangle, I can write that cos R will be how much? Cos R will be how much? Base is how much? This distance, BO. BO is how much? Basically T. So I can write T by BC. Okay. It means BC I will get, that will be T by cosine of R. Okay. Similarly, if you calculate CD from which triangle? From triangle G, C and D.
If you calculate cosine r will be how much? Cosine r will be again base. Base is how much? Base will be this, and this is nothing but t. So I can write t by what? CD. So from here I'll get CD. CD will be t by cosine r, and that is exactly same as BC. Okay, so I have calculated BC and CD. I'll substitute here. Okay, so BC plus CD कितना हो जाएगा आपका? BC plus CD, that will be your 2t by cosine r. Is it clear to all what I'm saying? Is it clear to all? क्या इतना clear है आप लोगों को? Please respond me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so now I'll calculate that BF, this length. So I'll assume this triangle. I'll assume triangle BFD. So this is your, basically this angle will be how much? 90 minus I, right? This will be how much? 90 minus I. So cos 90 minus I, what I can write? Cos 90 minus I, that is equals to how much? So this triangle base is what? Base is basically this. Cos 90 minus I, so base by hypotenuse. So base is basically how much? Base is BF, and hypotenuse of this triangle is basically, so this triangle I am assuming BFD. For this triangle, the perpendicular is basically what? DF, and base is BF, and hypotenuse is basically BD. So cos theta, theta is how much here? Cos theta is 90 minus I. So cos 90 minus I is nothing but base, that is BF, divided by hypotenuse BD. Okay, and BD I can write like BG plus GD, right? BG plus GD. And you see from this triangle, from triangle BCG, triangle BCG, I can write BG will be how much? BG will be T tan R from triangle BCD. From triangle BCG, that this will be your perpendicular. BG will be your perpendicular, and GC will be your base. So from this triangle, I can write tan R will be how much? Tan R will be BG by GC, and GC, you know, GC is exactly as T. So I can write in place of BG, basically from BGC triangle, that will be T tan R. Okay, and similarly from GCD triangle, I can write GD will be how much? GD will be again T tan R. Just to calculate from BCG and and GCD. From this two triangle, I will get BG will be how much? T tan R, and GD again will be T tan R. So basically, I'll get PF by twice T tan R. आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, नहीं? हाँ? Is it clear or not? ये वाला पार्ट Yes, क्लियर sir. है आप लोग? क्लियर है? सबको क्लियर है? No comment. नो, ओके ओके. 2T10 or हाँ, 2T tan R. अच्छा, यहाँ से बताओ आप ट्राइंगल BCG से बताओ, ट्राइंगल BCG से बताओ आप कि tan R कितना हो जाएगा? tan R कितना हो जाएगा BGC से? परपेंडिकुलर क्या है? BG है आपका, और बेस क्या है? GC है. GC सेम एज T. GC कितना है? थिकनेस के बराबर है. तो यहाँ से तो आपका BG आ गया ना. BG कितना आ गया आपका? T tan R आ गया. ठीक है. Similarly, if you choose GCD triangle, you will get GD. GD will be your perpendicular. That will be same as T into tan R. So again, from this GCD, will get T tan R. So from here T tan R, from here T tan R. So if you add them, you will get 2T tan R. Now is it clear? Is it clear now, or I have to Yes, repeat? sir. Yes, sir. Okay. Now cos 90 minus I, that is nothing but sin I.
sin I equals to BF divided by twice T tan R. Right? Okay. It means BF will be how much? That will be 2T sin I tan R. Tan of R, right? This will be your sin I. क्या इतना लिखा है आप लोगों ने? कोई डाउट है तो बताओ. No, sir. Okay, now from Snell's law, मैं क्या लिख सकता हूँ? Sorry. From Snell's law, what I can write that sin I equals to mu sin R. Right? Sin I equals to sin R. मैं लिख सकता हूँ क्योंकि n on sin I equals to n2 sin R होता है. अब n on कितना है? On है, right? So sin I equals to n2 कितना है? Mu sin R. So यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. sin I के जगह पे मैं mu sin R सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. So now I'll get BF. BF equals to how much? So it will be 2T mu. And tan R क्या होता है? Tan R होता है आपका sin R by cos R. And you have sin R here. So if you multiply them, you will get sin square R by cosine of R. अभी पूछ लो अगर पूछना है तो, कोई डाउट है तो. कोई डाउट है आप लोगों का यहाँ पे? नो सर. सबको क्लियर है? इतना जितना पढ़ाया गया सबको क्लियर है आप लोगों को? यस सर. अच्छा. अंजू, डू यू हैव एनी डाउट और अदर्स? राममोहन? हाँ. सर यहाँ पे माइनस BF sir. का कंसेप्ट बता दो एक बार. माइनस BF क्यों किया था यहाँ पे? अच्छा, माइनस BF क्यों किया है? अच्छा, मैं ये दो इमर्जिंग रे के बीच में पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ, है ना? तो मैं यहाँ से आपका एक नॉर्मल ड्रॉ कर किया, है ना? तो दोनों रे के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस निकालना जाओगे तो डिवाइड कहाँ पे हो रहा है? बी पॉइंट में हो रहा है, राइट? ठीक है ना? तो ये वाला जो पाथ है BC प्लस CD, दिस पाथ माइनस दिस पाथ, मतलब आप कौन सा ये रे और ये रे के बीच में आप निकालना चाह रहे हो ना पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. तो जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो आफ्टर नॉर्मल दे हैव सेम पाथ, नो प्रॉब्लम. बट जो मेन पार्ट डिफरेंस आ रहा है कहाँ पे? दिस पाथ, जब रे मीडिया, ये वाला रे मीडियम में जो रे ट्रेवल कर रहा है, ये पाथ और ये पाथ जो है, इन दोनों के पार्ट डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे इंटरफेरेंस बन रहा है. तो दो रे आपका BF, एक पहला रे का ऑप्टिकल पार्ट, दूसरा रे का ऑप्टिकल पार्ट कितना है? BC प्लस CD. इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वही आपका मेन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. आफ्टर दैट देयर विल बी नो पार्ट डिफरेंस. So main part difference is arising because of these two components, BC plus CD minus BF. Yes, okay, because you have drawn this normal. Normal is indicating this is the extra part that you have to take into account. Okay. Now, is this calculation clear to all? Is this calculation clear to all? Yes, sir. Okay. Now, what will be the optical part difference? Tell me. So, optical part difference, basically, I'll take this symbol, delta. So, if you remember, so BC plus CD was how much? If I am correct, 2Ty cosine R, right? It was 2Ty cosine R. And BF you have got, that is 2 mu T sin square R divided by cosine R, right? So you can you will get a common 2 mu T by cosine R. So 2 mu T by cosine R, that will be common, and you will have factor that is 1 minus sin square R. 1 minus sin square R is nothing but cos square R, right? So it will be cos square R. So on cos R will be cancelled. Okay. So basically optical part difference कितना मिला आपको? 2 mu T cosine of R.
ठीक है ना? 2 mu t, 2 mu t cosine of r, because I have taken 2 mu t divided by cosine r common, so we'll get 1 minus sine square r. In numerator, 1 minus sine square r is nothing but cos square r. You have cos r in the denominator, so 1 cos r will be cancelled, and you will basically get 2 mu t cosine of r. That is the part difference between these two rays. Okay. Now this is not actual part difference. So on important point you have to mention here. On important point you have to mention here, when a ray is reflecting from a denser medium, when a ray is reflecting from denser medium, comma, it will create an extra part difference of lambda by 2. It will create an extra part difference of lambda by 2. ब्रैकेट में पाई भी लिख सकते हो. पाई क्या है? बेसिकली फेज है. ठीक है ना? So when a ray is reflecting from a denser medium, it will create an extra part difference. That will be how much? Lambda by 2. ठीक है. अब बताओ कौन सा रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या BF रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, या ये वाला रे CD रे? आपका दो रिफ्लेक्टिंग रे है. आप देखो, एक आपका BF रे है और एक आपका CD वाला, ये वाला रे है. कौन सा रे रिफ्लेक्टिंग मीडियम से सॉरी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है? सो इस साइड मैंने क्या अज्यूम किया था? आपका AR है. इस साइड आपका क्या है? AR है. तो ये जो रे आ रहा है, जो यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, BF रे, दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम. ये वाला जो रे है, दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग वेयर? एट AR. सो BF जो रे है, ये आपका डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इसमें एक आपका एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा. कितना ऐड करना पड़ेगा? लैम्डा बाई 2 को. तो अगर लैम्डा बाई 2 ऐड कर रहे हो तो एक्चुअली बेसिकली क्या है आपका? एक्चुअली बेसिकली सब्सट्रैक्ट हो रहा है. तो इसके साथ अगर माइनस लैम्डा बाई 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका एक्चुअल पाथ डिफरेंस है. सर, हाँ, जो CD है ना, वो मीडियम के अंदर से मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? हाँ. रिफ्लेक्टिंग पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्टिंग है ना. एक्चुअली किसके कारण हो रहा है? उसका नीचे वाला जो मीडियम है उसके कारण हो रहा है. उसका नीचे वाला मीडियम क्या है? आपका AR है. ठीक है ना? वो ये AR क्या है आपका? एक्चुअली रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू हार्ट. ये वाला मीडियम के कंपैरिजन में आपको दो मीडियम को लेना पड़ेगा. दो मीडियम के बीच में हो रहा है ना, जब AR से आपका इसमें हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, तो ये वाला रे रिफ्लेक्ट हो रहा है. किसके कारण हो रहा है? इस मीडियम के कारण हो रहा है. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, कम है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AR से ज्यादा है. तो इसको क्या माना जाएगा? आपका डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है. ये वाला जो रे है एक्चुअली AR से रिफ्लेक्ट हो रहा है. इसके ऊपर मीडियम कौन सा है? थिन फिल्म वाला है. थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AR से ज्यादा है, तो इसको माना जाएगा रेयर से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो दो मीडियम लेना पड़ेगा, है ना, जहां से रे आ रहा है और दूसरा जो नीचे वाला मीडियम है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना. और हमेशा माना जाएगा कि नीचे वाला मीडियम से क्या है? रे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो यहाँ से जो है ये वाला मीडियम को माना जाएगा. जब ये वाला रे को आप चूज करोगे तो ऑब्वियसली ये डेंसर है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका एक डेंसर का ऐड करना पड़ेगा. तो ये आपका एक्चुअल पार्ट डिफरेंस है. ठीक है ना. फिर कल मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा. आपका ऑलरेडी टाइम हो चुका है. ठीक है. सो इफ यू सर हैव एनी म्यू इनटू 2 cos सर, r ये का फैक्टर कैसे हुआ? हाँ, म्यू इनटू 2t अपन cos r का फैक्टर ये कहाँ से है? ये आपका BC प्लस CD ये वाला पार्ट है. BC कैलकुलेट किया था ना मैंने, BC एंड CD. इफ यू सी, BC मैंने कैलकुलेट किया था. BC कितना आया था? T बाई cos r. CD भी कितना आया था? T बाई cos r आया था. BC CD सेम आया था. दोनों को कॉम्बाइन करोगे तो फिर क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा. दैट इज म्यू इंटू 2t cos r. सो दैट दिस component is basically coming from here. And BF I have calculated, that is 2i mu t sin square r by cosine r.
Okay, and I told you how we have to introduce this lambda by 2, because this ray actually traveling from or reflecting from denser medium, so you have to add this lambda by 2. Okay, so if you combine and solve, you will get actual path difference between these two rays, that will be 2 mu t cosine r minus lambda by 2. And this thing actually really important, not only for your JAM, this is important for TIFR, JEST as well. Okay, so please make sure that you understood this optical path difference between these two rays. Now tomorrow I'll proceed from here itself. Okay, so if you have doubt, tomorrow you can ask me. आज आप रिवाइज कर लो इसको, कल आप मेरे को पूछना, ठीक है? Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Good night, sir.